हैं आप सभी की उत्साह भरी तालियों सम्मान पूर्वक हम स्वागत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी यहाँ पर उपस्थिति से सभी यहाँ पर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपका विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहेंगे TRAI की इन खुशियों में शामिल होने का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। और अब मैं TRAI के चेयरमैन डॉक्टर PD वगेला जी को आमंत्रित करती हूँ उनके उद्बोधन के लिए। As ladies and gentlemen, he shares with us the 25 glorious years and the noteworthy journey of TRAI. Honorable Prime Minister of India, Honorable Minister for Communications, Honorable Ministers, aides and representatives of international regulators, Secretary, Minister of Information and Broadcasting and senior officers, past chairpersons and members of TRAI, telecom and broadcasting industry and its distinguished leaders, friends from media, ladies and gentlemen. I take great pleasure in welcoming Honorable Prime Minister of India as we celebrate Silver Jubilee of TRAI, which pleasantly coincides with the celebration of 75 years of India's independence. We are deeply honored by the esteemed presence of Honorable Prime Minister at this event. Since its inception in 1997, TRAI has completed 25 years of long journey in successfully regulating the telecom and broadcasting sectors. The technologies are changing very fast, and the regulators and the regulatory regime have to be agile, adaptive, and enabling. TRAI follows a much acclaimed transparent consultation process involving all the stakeholders and making regulations. Many countries look forward to our recommendations and regulations on various issues. Sir, over the years, TRAI has given transformational recommendations to the government and has created an enabling and light touch regulatory regime while protecting the consumer's interest at the same time. I will name a few. $4 billion tariff regime has led to competition and affordable services to the consumers. Technology neutral approach has given rise to faster adaptations of the latest technology. Enabling infrastructure sharing has benefited operators in reducing their cost and capex. Interconnection regulation has allowed entry of new operators. Quality of service regulations has improved the network quality substantially. TRAI was first to use blockchain technology for curbing spam and unsolicited messages. Mobile number portability regulation, which gives choices to the consumer to switch the service provider while retaining their mobile number, has increased competition among the service providers. TRAI's recommendation on creation of USO fund has allowed BharatNet and many other projects to connect unserved and unconnected regions of the country. Digital addressable system in the broadcasting sector has given choices to the consumer in selecting the channels. The regulation of must carry, must provide has enabled a large number of small broadcasters and cable operators to enter the television sector. Last but not least, implementation of our recent recommendation on 5G services and launching of 5G testbed for industry and startups today will create a new avenues for all the vertical sectors, leading to overall economic growth of the country. The government's Digital India mission, broadband mission, and digital literacy mission have resulted in a huge rural outreach of the internet services. This has led to digital and financial inclusion, especially in the last decade. The telephone subscriber base has increased to 1.17 billion, that is almost 80 times since 1997. The internet subscriber base has reached to 829 million. Data usage has increased to 15 gigabytes per subscriber per month from a mere 0.3 gigabytes in 2014. This has allowed various ministries and states to provide online delivery of services and direct benefit transfers to the poor, farmers, students, workers, and other citizens. Today, we are on the threshold of becoming a significant player in the global digital economy. Going forward, collaboration among the regulators to co-create and share infrastructure is critical for the reducing the cost of infrastructure and easy rollout services. Taking a cue from Prime Minister's visionary Gati Shakti, a multimodal connectivity master plan, TRAI has started collaborating with infrastructure regulators and ministries dealing with power, ports, airports, smart cities, and road transport and highways. In another noteworthy initiative, recently, TRAI, Reserve Bank of India, SEBI, and the Ministry of Consumer Affairs have come together on a forum
for curbing the menace of spam and online financial and other frauds. Today is World Telecommunication Day, which is celebrated across the world. I'm happy to inform that India has taken a leap on the World Regulatory Benchmark Index of ITU in just 1 year and has moved from Generation 3 to highest Generation 5 benchmark. We take note of the telecom and broadcasting sector for always rising to the occasion over the years. During COVID pandemic, they provided much needed connectivity at home and ensured online business, social interaction, entertainment, and education. I once again extend a warm welcome and express our gratitude to the Honorable Prime Minister. Sir, your presence has inspired us to work with all the more commitment towards nation building. Thank you. Thank you, sir, for highlighting the 25 glorious years of journey of TRAI and the futuristic vision and mission which you have for TRAI. And now requesting our Honorable Minister, Shri Ashwini Vaishnav-ji, the Honorable Minister for Communications, Electronics and Information Technology, and also Railways, to please address this august gathering. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi-ji, honorable dignitaries on the dais, honorable distinguished guests present physically and virtually. Today we are celebrating the World Telecom Day as well as the Silver Jubilee of TRAI. I congratulate all the stakeholders on this auspicious day, on this great day. With changing times, telecom service has become as important as bijli, sadak, pani, shiksha and suraksha and swasthya. It has become the primary medium of internet access, and telecom has retained its pole position in communications. But it has simultaneously emerged as important medium for consuming content for entertainment, education, news, and almost all sectors. COVID has accelerated this pace of digitization and virtualization. Simultaneously, we are also witnessing a major change in the industry structure. Capital intensity has increased, the technology cycles are reduced, and globally we are seeing that the industry is consolidating. Under such scenario of a global change, we in India, under Honorable Prime Minister's leadership and his guidance, are working on 3 strategic pillars. These 3 strategic pillars are: first is a globally benchmarked regulatory structure, second is technological leadership, and third is Antyodaya. I'll cover each of these 3 points in very short, in very brief. On globally benchmarked regulatory structure, last year's reforms in September 2021 have made the industry structure fairly simplified. Many structural reforms have happened and many procedural reforms have happened. The second point is about the PM Gati Shakti portal for right-of-way approvals. 32 states have joined in our federal structure for a very simplified approval system for right-of-way. And the credit goes to Honorable Prime Minister's vision. He gave us the idea of having a very integrated and a simplified way of planning. And the result is what used to take 100 days on an average for approval is now taking about 22 days on average for approval of ROW. There are many more reforms in the wing. As Honorable MOS said, the WPC reform should be ready within next few weeks, and that should come in front of all the stakeholders. Much more simplification is needed, and we are working on it. The second is about technological leadership. Very proud to say that Honorable Prime Minister gave us the vision of Atmanirbhar Bharat, and under his guidance and leadership, today our scientists and engineers have developed a complete 4G technology stack, which is ready for deployment by BSNL, and the 5G technology stack is also in very good advanced stage of development. By the end of this year, we should see our own indigenously developed 5G technology stack. The stack will have complete ecosystem for development, which includes a 5G test bed, which Honorable Prime Minister will release today, will inaugurate today, complete ecosystem for product development. If you go to the Sanchar Bhavan on the 13th floor,
There is an exhibition going. I invite all dignitaries present here to go and see it. Our own Indian companies have displayed their products and services, and the product quality is phenomenal. It's world standard. ITU Innovation Area Office has been opened in India. That's a great step. That's a recognition of our soft power. We are also very proud and happy to share that first time in the entire journey of mobile telephony, the Indian IPR has been recognized and included in the 3GPP Release 17 as a mandatory standard. That's the first step in the global table where all the big standard makers sit. So this is the path towards technological leadership. It doesn't stop here. This will continue in its journey. Third strategic pillar, as I said, is the Antyodaya, Honorable Prime Minister's vision of Sabka Saath, Sabka Vikas. We are now moving towards saturation coverage of all the villages of the far-flung areas, the marginalized sections, because we believe in inclusive development. Honorable Prime Minister has always espoused it. He has said that Sabka Saath, Sabka Vikas is a priority. And all this is possible only with the support of all our stakeholders. As Honorable Prime Minister says, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, or Sabka Prayas. So when all of us make efforts in the same direction, the results will be great. Thank you very much. Once again, many congratulations. Jai Hind. Thank you, Honorable Minister, sir, for highlighting the various initiatives which the Government of India is taking, which your ministry is taking under the leadership of our Honorable Prime Minister, especially in the wake of these changing times and the changing needs and aspirations of the citizens of the country, and also in the wake of the changing global order, highlighting all these initiatives which the government is taking towards transforming, reforming, and being a part of this change. Thank you, sir. And now, ladies and gentlemen, on this milestone occasion, we have a handful of releases at the hands of our Honorable Prime Minister, who's going to be dedicating these to the nation. So at the very onset, may I request our Honorable Prime Minister, sir, to please release the postage stamp marking the TRAI's Silver Jubilee celebrations with the click of the remote. So, ladies and gentlemen, enshrined in the annals of history is this important day, the milestone day of TRAI in the form of a stamp. और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि रिमोट का बटन दबाकर TRAI के सुवेनियर का विमोचन करने के लिए। Of the 25 glorious years of TRAI, the TRAI Act, the statutory mandate of TRAI, the growth story of the telecom services, internet services, broadcasting and cable services, the various achievements and contributions of TRAI, the organizational structure of TRAI, and then the chairpersons and various members and secretaries leading the organization in the last 25 years. And ladies and gentlemen, as we've been hearing from all our distinguished speakers, it's been very glorious years for TRAI these last 25 years, setting various milestones. And then seeing the various technological advancements of the future, the time is not very far when TRAI is going to be steering another revolution, another telecom revolution in the country. So we have tried to capture all these glorious years of TRAI and also looking into the future prospects with 5G and also India becoming Atmanirbhar in the form of a short film,
which is entitled Telecom Evolution in the Atmanirbhar Bharat 5G and Future Prospects. May I request the Honorable Prime Minister, sir, to please release this film. The dream of building a self-reliant India is fueled by innovation and information and communication technologies, where the possibilities are beyond the limits of the sky. TRISE has set many milestones in India's growth story. TRI is now celebrating 25 years of its contribution to the nation. Along with 75 years of independence, Azadi Ka Amrit Mahotsav, the government led by Shri Narendra Modi has leveraged technology to enhance ease of living and encourage transparency in governance. We are using digital technology to transform lives in all sectors of governance, from health and welfare to inclusion and empowerment. Telecom sector has played a stellar role in realizing the mission of Digital India by empowering the citizens through advancements in digital communications. In the Regulatory Tracker Index of International Telecommunications Union, ITU, TRI satisfies the highest benchmark of maturity, establishing itself internationally as a progressive regulator. While crossing over many challenges successfully, TRI steered the connectivity revolution in India in the last 25 years, and the journey continues. 1,167 million total phone subscribers, per GB data cost at ₹10, over 906 private satellite TV channels, over 800 radio stations. Enhanced connectivity boosted the digital economy with a phenomenal growth of UPI transactions, crossing 5 billion per month, worth more than 9 trillion rupees. The revenue from the telecom sector is almost 6% of the GDP in 2021. And what makes us really proud is the fact that during the pandemic, the telecom sector enabled almost 35% of the GDP, showing how digital communication can overcome the steepest of obstacles. TRI's path-breaking steps have contributed to transformation in the delivery of telecommunication, broadcasting, and cable services in the country. Infrastructure sharing reduced the cost of network deployment. One nation, one mobile number, achieved through mobile number portability. Tariff forbearance provided flexibility to service providers for innovative offers to consumers in a dynamic and competitive market. Digital addressable system brought in transparency and improved choice. TRI is a pioneer in the introduction of blockchain technology as a regulatory technology to curb the spam. Consumer protection and digital inclusion has been the cornerstone for the regulatory approach of TRI. TRI is looking to enable futuristic telecom services. These include machine-to-machine communication, convergence of broadcasting and telecommunications, holographic technology, augmented reality or virtual reality, quantum computing, digital twins, robotic collaborated factories, wheat agriculture, rural industry, water management, health, education, civic management, or entertainment. From robotic surgery to smart ambulances for enhanced preparedness for the healthcare sector. As the future awaits further technological advancements such as 6G, the time is not far off wherein citizens can experience the benefits of tactile connectivity, advanced security, and automated driving experience. TRI intends to be at the forefront of another revolution in the making, taking India forward through telecommunication, effective regulation, ease of communication. Is the Kal, Aaj and Kal of TRAI taking India forward. And further, ladies and gentlemen, it's such a proud moment for India that, inspired and motivated by the clarion call of our Honorable Prime Minister towards becoming Atmanirbhar, India has developed its own 5G test bed
led by IIT Madras. And it's a shining example of the collaboration between the academia, between the government, and between the industry. The Department of Telecommunications has chaired it. And this, ladies and gentlemen, is among the best in the world, and it is going to be helping Indian telecom industry achieve greater heights globally and also further becoming Atmanirbhar in the telecom space. We had Professor Bhaskar of IIT Madras talking to us about it. But for further details, we have a short film, which we now help you in viewing that. If you can have the film, please. India, a country with 116 crore telecom subscribers, has the second largest user base in the entire world. Since 2014, the broadband subscriber base has increased by 1,200% to 79 crores, and the average data consumption per user has grown more than 20-fold. On the clarion call of the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, India has recently demonstrated Atmanirbhar 4G capability. As we celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav, it is time for a qualitative leap forward to shape the future of telecommunications in India and the world. Towards this, we have taken several steps to develop the entire 5G ecosystem within India. In an effort to nurture talent, Department of Telecommunications conducted a 5G hackathon where startups were given an opportunity to showcase their innovations. To improve rural 5G coverage, new enhanced wireless standards called 5GI and LMLC were developed jointly by Indian academia and industry. These enhanced standards are now part of the global 5G standard. बजट में इसी साल 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन को लेकर बहुत स्पष्ट रोड मैप बताया गया है। देश में स्ट्रॉन्ग 5G इकोसिस्टम में इसे जुड़ी हुई डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बजट में PLI स्कीम्स प्रपोज की गई है। Till now, India did not have a testing facility, and hence startups and companies had to go abroad. With a fund of 224 crore rupees, more than 300 engineers and 40 scientists across 8 institutes collaborated to develop a complete end-to-end 5G testbed facility. The testbed has all the components of the 5G network, ranging from the antennas, radios, the base stations, to the core network at the heart of the systems. The testbed provides full capability to support and test IoT applications such as autonomous vehicles, smart sensors, remote robotics, and the like. The testbed supports प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वे अपने कर कमलों द्वारा रिमोट का बटन दबाकर 5G टेस्टबेड का लोकार्पण करें। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और देवी सज्जनों, मेरे ख्याल से हम सभी ये महसूस करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के सकारात्मक सोच में और निर्णायक सोच में हमारा भारत बदल रहा है और विशेष रूप से भारत की सोच बदल रही है और आज एक नया भारत, कनेक्टेड, एम्पावर्ड, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। And then the world also knows our Honorable Prime Minister as a Gatishil Pradhan Mantri, the last mile Pradhan Mantri.
Now, this is because of the concern which he has, even for the person at the last mile, towards ensuring that the services, the programs of the government of India are able to reach and benefit the person at the last mile. आखिरी छोर पर खड़ा हुआ नागरिक भी आज इन डिजिटल सेवाओं को प्राप्त कर, इनके सुख को महसूस कर आज आकांक्षाओं से भरा हुआ है, उम्मीदों से भरा हुआ है, आशावान है। और 21वीं सदी का भारत साइलोस को तोड़कर, स्टीरियोटाइप्स को तोड़कर आगे की ओर अग्रसर है ग्लोबल ऑर्डर में। And all this has been possible under the guidance and leadership of our Honorable Prime Minister, जिन्होंने हमेशा से हमें नए संकल्पों के लिए, नए इरादों के लिए, नई बुलंदियों को छूने के लिए प्रेरित किया है। तो आप सभी की तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध होकर निवेदन करती हूं कि अपने अभिनव विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए। नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री अश्विनी वैष्णव जी, श्री देवसी चौहान जी, डॉक्टर एल मुरुगन जी, टेलीकॉम और ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर से जुड़े सभी लीडर्स, देवियों और सज्जनों, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई, इससे जुड़े सभी साथियों को सिल्वर जुबिली की बहुत बहुत बधाई। ये सुखद संयोग है कि आज आपकी संस्था ने 25 साल पूरे किए हैं। तब देश आजादी के अमृत काल में अगले 25 वर्षों के रोड मैप पर काम कर रहा है, नए लक्ष्य तय कर रहा है। थोड़ी देर पहले मुझे देश को अपना खुद से निर्मित 5G टेस्ट बेड राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर मिला है। ये टेलीकॉम सेक्टर में क्रिटिकल और आधुनिक टेक्नोलॉजी की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है। मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी साथियों को, हमारे IITs को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही मैं देश के युवा साथियों को, रिसर्चर्स और कंपनीज को आमंत्रित करता हूं कि वो टेस्टिंग फैसिलिटी का उपयोग 5G टेक्नोलॉजी के निर्माण के लिए करें। विशेष रूप से हमारे स्टार्टअप्स के लिए अपने प्रोडक्ट टेस्ट करने का ये बहुत बड़ा अवसर है। यही नहीं, 5GI के रूप में जो देश का अपना 5G स्टैंडर्ड बनाया गया है, वो देश के लिए बहुत गर्व की बात है। ये देश के गांवों में 5G टेक्नोलॉजी पहुंचाने और उस काम में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। साथियों, 21वीं सदी के भारत में कनेक्टिविटी देश की प्रगति की गति को निर्धारित करेगी। इसलिए हर स्तर पर कनेक्टिविटी को आधुनिक बनाना ही होगा और इसकी बुनियाद का काम करेंगे
आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, आधुनिक टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, 5G टेक्नोलॉजी भी देश की गवर्नेंस में, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन अनेक विषयों में सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। इससे खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स, हर सेक्टर में ग्रोथ को बल मिलेगा। इससे सुविधा भी बढ़ेगी और रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। अनुमान है कि आने वाले 1.5 दशक में 5G से भारत की अर्थव्यवस्था में $450 बिलियन का योगदान होने वाला है। यानी ये सिर्फ इंटरनेट की गति नहीं, बल्कि प्रगति और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की गति को भी बढ़ाने वाला है। इसलिए 5G तेजी से रोल आउट हो, इसके लिए सरकार और इंडस्ट्री दोनों को कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। इस दशक के अंत तक हम 6G सर्विस भी लॉन्च कर पाए, इसके लिए भी हमारी टास्क फोर्स काम करना शुरू कर चुकी है। साथियों, हमारा प्रयास है कि टेलीकॉम सेक्टर और 5G टेक्नोलॉजी में हमारे स्टार्टअप्स तेजी से तैयार हो, ग्लोबल चैंपियन बने। हम अनेक सेक्टर्स में दुनिया के एक बड़े डिजाइन पावर हाउस है। टेलीकॉम इक्विपमेंट मार्केट में भी भारत के डिजाइन चैंपियंस का सामर्थ्य हम सभी जानते हैं। अब इसके लिए जरूरी R&D इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर हमारा विशेष फोकस है और इसमें आप सबकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, आत्मनिर्भरता और स्वस्थ स्पर्धा कैसे समाज में, अर्थव्यवस्था में मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा करती है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण हम सब गर्व से कह सकते हैं, हमारा टेलीकॉम सेक्टर है। हम जरा पुरानी तरफ नजर करें, 2G का काल यानी निराशा, हताशा, करप्शन, पॉलिसी पैरालिसिस, और आज उस कालखंड से बाहर निकलकर देश ने 3G से 4G और 5G और 6G तक की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए हैं। ये ट्रांजिशन बहुत स्मूथली, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है और इसमें TRAI की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन हो या AGR जैसे मुद्दे, जब भी इंडस्ट्री के सामने चुनौतियां आई हैं, तो हमने उतनी ही गति से रिस्पॉन्ड करने का प्रयास किया है और जहां जहां जरूरत पड़ी हमने रिफॉर्म भी किया है। 'ऐसे ही प्रयासों ने
एक नया विश्वास पैदा किया। इसी का परिणाम है कि 2014 से पहले एक दशक से ज्यादा समय में जितना एफडीआई टेलीकॉम सेक्टर में आया है, उसमें 1.5 गुना से अधिक सिर्फ इन 8 सालों में आया है। भारत के पोटेंशियल पर इन्वेस्टर्स के इसी सेंटिमेंट्स को मजबूत करने की जिम्मेदारी हम सभी पर है। साथियों, बीते वर्षों में सरकार जिस तरह नई सोच और अप्रोच के साथ काम कर रही है, उससे आप सभी भली भांति परिचित हैं। साइलोज वाली सोच से आगे निकलकर अब देश होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। आज हम देश में टेली डेंसिटी और इंटरनेट यूजर्स के मामले में दुनिया में सबसे तेजी से एक्सपांड हो रहे हैं, तो उसमें टेलीकॉम समेत कई सेक्टर्स की भूमिका रही है। सबसे बड़ी भूमिका इंटरनेट की है। 2014 में जब हम आए तो हमने सबका साथ सबका विकास और इसके लिए टेक्नोलॉजी के व्यापक उपयोग को अपनी प्राथमिकता बनाया। इसके लिए सबसे जरूरी ये था कि देश के करोड़ों लोग आपस में जुड़े, सरकार से भी जुड़े, सरकार की भी सभी इकाइयां, चाहे केंद्र हो, राज्य हो, स्थानीय स्वराज संस्थाएं हो, वे भी एक प्रकार से एक ऑर्गेनिक इकाई बन करके आगे बढ़े, आसानी से कम खर्च में जुड़े, बिना करप्शन के सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकें। इसलिए हमने जनधन, आधार, मोबाइल की ट्रिनिटी को डायरेक्ट गवर्नेंस का माध्यम बनाना तय किया। मोबाइल गरीब से गरीब परिवार की भी पहुंच में हो, इसके लिए हमें देश में ही मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग पर बल दिया। परिणाम यह हुआ कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स 2 से बढ़कर 200 से अधिक हो गई। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है, और जहां हम अपनी जरूरत के लिए फोन इंपोर्ट करते थे, आज हम मोबाइल एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। साथियों, मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जरूरी था कि कॉल और डेटा महंगा ना हो। इसलिए टेलीकॉम मार्केट में हेल्दी कंपटीशन को हमने प्रोत्साहन किया। इसी का परिणाम है कि आज हम दुनिया के सबसे सस्ता डेटा प्रोवाइडर्स में से एक है। आज भारत देश के हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने में जुटा है। आपको भी पता है कि 2014 से पहले भारत में 100 ग्राम पंचायत भी
ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी से नहीं जुड़ी थी। आज हम करीब करीब 1.25 लाख ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचा चुके हैं। कुछ समय पहले ही सरकार ने देश के नक्सल प्रभावित अनेक जनजातीय जिलों में भी 4G कनेक्टिविटी पहुंचाने की बहुत बड़ी योजना को स्वीकृति किया है। ये 5G और 6G टेक्नोलॉजी के लिए भी अहम है और मोबाइल और इंटरनेट के दायरे का भी इससे विस्तार होगा। साथियों, फोन और इंटरनेट तक ज्यादा से ज्यादा भारतीयों की पहुंचने भारत के एक बहुत बड़े पोटेंशियल को खोल लिया है। इसने देश में एक सशक्त डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखी है। इसने देश में सर्विस की एक बहुत बड़ी डिमांड पैदा की है। इसका एक उदाहरण देश के कोने कोने में बनाए गए 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं। इन कॉमन सर्विस सेंटर्स में आज सरकार की सैकड़ों सर्विसेज गांव के लोगों तक पहुंच रही हैं। ये कॉमन सर्विस सेंटर्स लाखों युवाओं को रोजगार का भी माध्यम बने हैं। मैं पिछले दिनों गुजरात में एक कार्यक्रम में गया था। वहां दाहोद जिला जो जनजातीय क्षेत्र है, आदिवासी विस्तार है, वहां का एक दिव्यांग कपल मिला मुझे। वो कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं। उन्होंने कहा मैं दिव्यांग था तो मुझे ये थोड़ी मदद मिल गई और मैंने शुरू किया और आज वो 28-30 हजार रुपया आदिवासी क्षेत्र के दूर दराज गांव में कॉमन सर्विस सेंटर से कमा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि आदिवासी क्षेत्र के नागरिक भी ये सेवाएं क्या है, ये सेवाएं कैसे ली जाती है, ये सेवा कितनी सार्थक है, इसको भी जानते हैं। और एक दिव्यांग कपल वहां छोटे से गांव में लोगों की सेवा भी करता है, रोजी रोटी भी कमाता है। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी किस प्रकार से बदलाव ला रही है। साथियों, हमारी सरकार टेक्नोलॉजी को निरंतर अपग्रेड करने के साथ साथ देश के डिलीवरी सिस्टम को भी लगातार सुधार रही है। इसने देश में सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों से जुड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम को बल दिया है। ये भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के पीछे एक अहम कारण है। साथियों, ये होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच हमारे ट्राई जैसे तमाम रेगुलेटर्स के लिए भी वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए अहम है। आज रेगुलेशन सिर्फ एक सेक्टर की सीमाओं तक सीमित नहीं है। टेक्नोलॉजी अलग अलग सेक्टर्स को इंटरकनेक्ट कर रही है। इसलिए आज कोलैबोरेटिव रेगुलेशन की जरूरत हुई हर कोई स्वाभाविक रूप से अनुभव कर रहा है। इसके लिए जरूरी है कि तमाम रेगुलेटर्स साथ आए, कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार करें और बेहतर तालमेल के साथ समाधान निकालें। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कॉन्फ्रेंस से इस दिशा